have practicals. You don't have practicals. That is good. So right now you have the time only for self study, correct? Yes. ठीक है. So when you have only time for self study ना, then उसके बाद अभी आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है ना कि आपको NCERT का एक्सरसाइजेस को फोकस रखिए कि have to solve all the NCERT exercises, and I don't think कि कोई भी स्कूल ऐसा होता है which in which they are going to ask away from NCERT. They will be asking most of the question directly from the NCERT. Is that right? आपकी यूनिट टेस्ट में ऐसा हुआ है, फर्स्ट टर्म में ऐसा हुआ है? Yes. है ना? So keeping that in focus, ठीक है? I'm not undermining the importance of concept. I'm not undermining the importance of understanding a particular thing, but right now our priority is to solve problems and to get good marks. तो उसके लिए आप अगर हम लोग को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो तैयारी वहीं से करते हैं ना. अगर आपने एक सवाल को है एक बार किया, ठीक है ना, आपने एक सवाल देखा हुआ है, उसके बाद मान लीजिए आपसे एक सवाल हो गया, and then you mark them like this, that this is done, this is done, okay, and then question number third nahi aaya, and so you mark them, you circle it that you have to review this question number 3 how to do it. ठीक है. So once you have done everything, आपने question number 10 तक कर लिया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 क्या, नाउ यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन बिकॉज आपने एक बार चैप्टर देखा हुआ है. तो आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक जब कर लिया, उसके बाद यू गो बैक टू द नोट्स, ओके, कि ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हुआ है, इसका कंसेप्ट कहाँ पे है. फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट इन थर्मोडायनामिक्स ये इसमें एक वर्ड आ रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी, तो फिर आप उस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा, है ना. अगर इसमें एक टर्म आ रहा है फॉर्मेशन, enthalpy of formation, then you will revise that particular topic, जो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से अगर सवाल है तो वो हमसे बन नहीं रहे हैं. मे बी आई नो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, मे बी आई नो व्हाट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, बट लेकिन इस टॉपिक से अगर सवाल आ रहा है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है. देन यू विल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें फिर हमने एग्जांपल्स कराए होंगे, उसको आप रिवाइज कीजिएगा. ओके, सो आई थिंक दैट विल सेव अ बिट ऑफ योर टाइम, और उसमें आपको ना एग्जैक्टली यू कैन फोकस कि मेरे पास प्रॉब्लम ये है, इस टॉपिक के सवाल नहीं बन रहे मेरे से, ये टॉपिक हमको आ रहा है, आपको सब कुछ अपना नजर आएगा. हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए इस मामले में कि यू ट्राई टू लॉग एवरीथिंग डाउन, कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, और क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए आपको आता है, यू नो आई हैव डन दिस इन क्लास, नोट्स में हमारे है ये नोट्स, बट इट इज टेकिंग टू मच टाइम, देन उसको भी आप मार्क कीजिए कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है हमको, कि इट इज टेकिंग टू मच टाइम. सो यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग बिकॉज यू हैव एग्जामिनेशन ऑन 10th मार्च ना, तो वो आपका हो जाएगा एक दिन में. अगर आप एक चैप्टर का रखिए, एक दिन में एक चैप्टर का रखिएगा, तो आई थिंक अराउंड 4 hours यू विल स्पेंड. आप 2 घंटे मान लीजिए आपको सवाल बनाने में लग गए, 2 घंटा आपका रिव्यू करने में लग गया, ठीक है. तो डेली एक चैप्टर आप कर लीजिए आराम से, 5-7 चैप्टर्स होंगे आपके, हो जाएगा जल्दी 7 दिन के अंदर, ठीक है. सो मे बी ट्राई दिस एटलीस्ट फॉर 1 चैप्टर, आप ट्राई करके देखिए. ओके, फाइन माजिया? Yes, sir. ओके, make sense? Yes, it does. Okay, fine. And what about Mehreen? How are you, Mehreen? Yes, I'm good. How Good. are you? आज आपका I'm good, thank you, alhamdulillah. And आज आपका इंटरनेट ठीक काम कर रहा है? Yes, sir. Okay, fine. अच्छा, देखिए, do you need classes right now? हम एक चीज पूछना चाहते थे, आपकी फिजिक्स के क्लासेस हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, उसमें टेस्ट हो रहे हैं, फिजिक्स में, बायो में या मैथ्स में, या खत्म हो गया रिवीजन? अच्छा, आप लोग नहीं करते क्या फिजिक्स, बायो या मैथ्स कुछ और? माजिया एंड मेहरीन? Okay, what happened? Am I not audible? I only come for chemistry tuition. Acha, what about Mazia? So I go for all 4 subjects. Acha, so you are having classes on those subjects right now? Yes. Revision and tests, na? Matlab test hota hai fir discussion, Yes. right? Okay. Yes. So in the last class, I asked you to study states of matter, correct? Yes, sir. है ना, ठीक है. So I will give you a few questions on states of matter, ठीक है? And I will not be giving you questions to वो solve करने वाला नहीं देंगे, क्योंकि examination में I don't think आपको ज्यादा सवाल solve करने का मिलेगा. How is your paper in your school? Like most of the school I have seen, they will ask conceptual questions in the sense that define कीजिए इसको, and इसका formula लिख के बताइए, what is this term known as, you know, what is Charles law, state the Charles law,
व्हाट अबाउट योर स्कूल माजिया, कैसे सवाल आते हैं? इस माजिया हर किस्म के आते हैं, नहीं पता कैसे आते हैं। So they give mixed questions. मिक्स्ड क्वेश्चंस। Yeah. आई एम गिविंग यू 4 स्मॉल क्वेश्चंस, ठीक है? आप इनको ट्राई कीजिए, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा वो सारे टॉपिक्स जो शायद आप आई एम नॉट गिविंग यू एनी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दी PV is equal to NR, ठीक है? 400 2200 से नहीं दे रहे क्योंकि 2000 वो नाम ही है चैप्टर का गैस, तो आप पढ़ के ही रखिए, ठीक है? बट दीज आर सम क्या बोले मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनका आप शायद भूल जाए। ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन यू राइट, 5th नंबर, राइट दी van der Waals equation for n moles of gas. Yeah. Also write the van der Waals equation for 1 mole of gas. रियल गैस होता है तो रियल गैस ही लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, try to do these questions. Oh, sorry, I have not shared my screen. Wait a second. I'm really sorry. Can you see it now? Okay, thank you. मेहरीन एंड मासिया, आपके स्कूल में अभी तक कोई मॉडल टेस्ट पेपर हुआ है फाइनल के लिए? प्री बोर्ड मॉडल व्हाटएवर यू से। Yes, sir. अच्छा, मेहरीन आपके स्कूल में हुआ है। मेहरीन आप समायरा के स्कूल में है ना, साथ में ही है ना? Sir, I'm in दमाम, राइट? ISD. ISD दमाम ना? Yes, sir. अच्छा, तो उसमें तो सवाल, आई हैव द क्वेश्चन पेपर। हाउ वाज योर पेपर मेहरीन? Sir, I sent you. नहीं, हमको तो अच्छा आपने भेजा था, हमने समायरा से मांगा था। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि यू हैव सेंट मी, लाइक यू हैव सेंट मी इन माय पर्सनल नंबर। No, sir, I've sent the other number. निष्कर्ष सर ना? अच्छा, आई एम आस्किंग आपका कैसा गया पेपर? It was okay, sir. ओके मींस ओके मींस व्हाट मैरी? पेपर वाज तो फ्रॉम नोट्स ओनली। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, नहीं? Yes, sir. It was fine, but some parts I got confused. The last case study part. केस स्टडी पार्ट। अच्छा, टाइम का हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टाइम? टाइम कैसा था, मिला था आपको? टाइम कम पड़ा Sir, या फिर I ठीक था? finished before 30 minutes. अच्छा, ठीक है, सो वी विल डिस्कस द केस क्वेश्चन, ओके? अच्छा, वाओ माजिया, गुड।
When was this test, Mazia? So this was in February. This was on February. Okay. Mehreen, by any chance, are you friends with Mariam and Aisha or anyone? Which Mariam? Which I don't know which Mariam. I just know her name Mariam. Okay, fine, no problem. She lives very far away, not near the mom. उसको 2-3 घंटे लग जाते हैं, इतना दूर है उनका घर. That Mariam, if it makes Yes, sense to I you. don't know. अच्छा, you don't know. Okay.
Okay, and after you are done, you may send the answers to Nishkarsh sir. Okay. So I think 5 more minutes would be enough, right? Yes, Marine and Mazia. Yes, sir. Okay.
Just raise your hand if you have sent the answer to Nishkarsh sir. Yes, Marcia and Marine, not done. Just send the answers. Don't spend too much time on one question. Hai na? Sending. Okay, fine, fine. Okay. What about Mazia? Did you send the answer, Mazia? So I have sent. Okay, so states of matter and somebody has written date on the right side. I think this is Marine, right? Yes, sir. Okay. So, okay, fine. You have problem in the second question. Also, I think third question you did not do it right, correct? Yes, sir. Okay. What about Mazia? Send the answer, Mazia. Yes, sir, I have. Okay, you have sent the answer. Okay, I'm not received it. Which number? 93102? The one with Learnivio in the profile picture? Yes, sir, that one. The purple color. Okay, okay. So my internet is bad, so maybe it's taking time. Sorry? My internet is bad. So it got uploaded, right? I mean, did they receive it? No, like Acha, there's single only tick one only. tick. Mhm.
Okay, so, Acha, Mazia, you tell me. I have not received your answer. So you tell me, were you able to do the second question? So second and third, I couldn't. After second and third, okay, fine. So देखिए, second one is easy, है ना? Second one उतना ज़्यादा आपको कुछ लगेगा नहीं. Carbon dioxide is heavier than N2 and O2. It is saying it is heavier because the molar masses of CO2 is greater than N2 and O2. Okay, but it is saying that it does not form the lower layer. That means we have air here, right? So it is saying that what should happen is that the lightest should be above, then the next gas, then the next gas, then the next gas, like this. Okay, this is the lightest of all gas, and this is the heaviest of all gas. This is the question is saying it should be like this, but we know that gas, they don't stay at one place, right? So we don't have any particular gas in the lower layer because all gases mixed together. So in the lower layer, what do we get? We get a mixture of gases and not any particular gas that is the heaviest. Okay, so it doesn't matter whether a gas is heavy or light, it will not be forming the lower layer or the upper layer of the atmosphere because all the gas, they tend to mix with each other. Okay, so a very simple reason here, but again, the question seems it is kind of very philosophical. So you understood this question number 2, right? No problem. Okay. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So mainly the answer is they, because all gas mixed together, and all you can also, rather than writing mixed together, you can use the word diffuse and get uniformly distributed. ठीक है, लेकिन मोटा मोटा समझे तो दैट इज दे मिक्स टुगेदर. अच्छा, आपका रिसीव नहीं हुआ अभी तक सर को. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वान डेर वाल्स कांस्टेंट? अच्छा, महरीन यू टेल मी फर्स्ट. ये लाइक सवाल आपने देखा है या देखा ही नहीं है कभी, या आपको Sir, I समझ ही know नहीं the आया? answer. सॉरी Sir, I know the answer. I didn't read constant. अच्छा, यू नो द आंसर. अच्छा, सो टेल मी. और माजिया, वेट अ सेकंड, माजिया आपने ये सवाल देखा ही नहीं है, मतलब क्या, कैसे फीलिंग आ रही है? I have seen it before, but don't remember exactly, है ना? yeah. And you have written these van der Waal equation, yes or no, for n moles and for 1 mole, Mazia? Yes, Mazia? Yes. Okay, so वहाँ पे A and B आया होगा, so we are asking what is the significance of that A and B. Okay, what is the significance of that A and B? So yes, Mehreen, you tell me, what do you think, what is the answer? A is the measure. A is the measure of magnitude. Magnitude? What magnitude? A gives an idea about? I just remember that much. And B is the volume of the particle. About size or volume, same thing, huh? Size or volume. And A gives the idea about magnitude of the particle. मैग्नीट्यूड नहीं, ये मैग्नीट्यूड तक ठीक है, उसके बाद आप भूल जा रही हैं. A gives the idea about the magnitude of intermolecular force of attraction, ना, magnitude of force of attraction. ठीक है, देखिए, I think both of you wrote this answer, ना, the next answer. ठीक है, did you write this answer, Mazia? Fourth one? Yes. I could not hear you. अच्छा. Yes. Okay, so can you read those answer? Read those answer, na? What are the two faulty assumptions? So the fourth one? Yeah, fourth one. Answer for the fourth one. What did you write? I have written I could not hear you.
Uh, what about now? What about now? No, I Read. earphones. Acha, read. I think I can hear you now. The volume occupied by gas is negligible and the molecules don't exert force of attraction. Can you see a relationship? Yes. Okay. So एक ही चीज है, like in both of them, like whatever the faulty assumption of kinetic molecular theory था ना, kinetic theory of gases, that has been taken into consideration in the van der Waal gas equation for real gases. ठीक है? So that is why those two, A and B, are the, what I can say, are getting around the problem of faulty assumptions. We want to solve that faulty assumption. So इसी वजह से हम लोगों ने A और B दोनों कांस्टेंट्स को लिया है यहाँ पे. ठीक है? So please remember van der Waal constants and kinetic theory of gases. So kinetic theory of gases की जो faulty assumption है, वही आपको represent, वही आपके A और B होंगे van der Waal की equation. So A is force of attraction. A से याद रख लीजिए आप. A is for attraction and B is for size या volume. B को आप ऐसे याद रखिए, BV है ना, BV B से वॉल्यूम, A से अट्रैक्शन. याद रहेगा माजिया महरीन? Yes, sir. है ना? तो आपको एक ही याद रखना है और आंसर आपके पास दो सवालों के हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ van der Waal कांस्टेंट एंड फॉल्टी असम्पशन. फॉल्टी असम्पशन बस ये बता देना कि वी अज्यूम दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयर इज नो वॉल्यूम, एंड सिग्निफिकेंस में A गिव्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, B गिव्स द वॉल्यूम. ओके, चलो फाइन. सो आई थिंक, अच्छा, now you tell me guys, do you have any doubts from any chapter in chemistry right now? No. महरीन का तो एग्जाम काफी लेट है ना महरीन? Yes, sir. अभी आपके मॉडल्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है अभी? Models just started. जस्ट स्टार्टेड. उसमें केमिस्ट्री हो गया, तो अभी तो आप केमिस्ट्री छूइएगा नहीं, है ना? Yes, sir. Like you are done with chemistry ना in models. Yes, chemistry. So अब तो आप केमिस्ट्री छूइएगा नहीं काफी दिन तक, या will you keep studying chemistry? Yes, sir. You will keep. ये बोलने मुझे बोल रही हैं, आपको पता है कि आप कीजिएगा, मुझे मेरे बोल मतलब हमको मत सुनाइए कि हम पढ़ेंगे सर आपका सब्जेक्ट. नॉट लाइक दैट. आप सच सच बताइए. No, sir, I'll study because. अच्छा, आपने प्लान बनाया हुआ है अपना एग्जाम के लिए? Yes, sir. प्लान बनाया हुआ आपने. माजिया, आपने प्लान बनाया हुआ एग्जाम के लिए, किस दिन क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है? Sorry, sir. Have you made a plan for examination, at what time and what day, what subject and topic you have to study? Not really. Not really. Like randomly. No, it's really. अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से. I could not understand. What did you say? Like randomly. Randomly? Oh, नहीं, प्लान बना लीजिए माजिया, ठीक है? If you want, I can help you a bit. Like how to start. You first of all, your aim should be, I think that you can apply this on everything, that questions should be your main focus right now. Concepts हो गए, जितना पढ़ना था आपको, अब आप सवाल लगाइए, and the more questions you do, you will see that you have some gaps in the understanding of a few concepts. So वहीं से आपको आएगा when you do the questions. So first of all, timetable of exam. ठीक है? So it's starting on 10th ना? What did you say? 10th of March, right? No, sir, it's starting on 6th of March. 6th Like of chemistry is on 10. Chemistry is on 10. Okay, 6 March. Do you have gaps? Yes. Okay, after 6th, when is your paper? 8th, March. 9th or 8th? 8th. 8th March, 1 day gap, okay. After that, 10th March. Then 12th. 12th March. And 14th March. 14th? 13th. 14th March, okay, fine. So you have 1 day gap on each of the subjects, and today is 24. Now, so on 6th, what do you have? English. English.
1 day will be fine for English, right? Yes. है ना? अभी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इंग्लिश, है ना? आप यानी कि 5th को पढ़िएगा इंग्लिश, 6th को एग्जाम दे दीजिएगा, चल जाएगा? Yes. ठीक है। 8th को क्या है आपका? व्हाट इज ऑन 8th? Maths. मैथ्स। तो इसमें आप पहले बताइए लाइक हाउ मेनी चैप्टर्स डू यू हैव दैट यू हैव टू लाइक डू कंप्लीट, पूरा करना है, जिसमें आपको लाइक बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? ऐसे 3 कितने चैप्टर? chapters. सॉरी, 3. 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स कौन कौन से? पीएनसी ये सब है क्या? Yeah. Trigonometry and conic sections and permutations and yeah, पीएनसी है, yeah. these 3 चैप्टर्स। ओके। कोनिक सेक्शन तो हो जाएगा, कोनिक सेक्शन आपको आसान पड़ेगा, ज्यादा टफ नहीं है। आई कैन से यार, अब ये डिपेंड करता है। इफ यू कैन मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग देन ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू बी इजी बिकॉज आइडेंटिटीज याद करना है। पीएनसी, इफ यू आर गुड इन व्हाट आई कैन से सीइंग पैटर्न्स एंड अरेंजिंग थिंग्स, देन पीएनसी विल आल्सो बी फाइन। लेकिन हाँ, पीएनसी में थोड़ा सा आपको कुछ कुछ उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज सर्कुलर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, नहीं है ना 11th में? तो No. सर्कुलर नहीं है, है ना? ओके, मतलब एक प्लेन वाला ही है, विल नॉट बी मच टफ। क्या हुआ था, पीएनसी क्यों नहीं किया आपने ठीक से? चैप्टर तो बहुत अच्छा है, लाइक इवन आई रिमेम्बर नाउ, जमाना हो गया हमको मैथ्स पढ़े हुए। No, because I lost marks in that technicalities. यू लॉस्ट? I lost marks. अच्छा, यू लॉस्ट मार्क्स इन दैट, ओके। नहीं लाइक जब आपने पढ़ा होगा उसमें, मतलब लाइक आपने किसी टीचर से सही से पढ़ा नहीं, या फिर क्या हुआ था पढ़ने टाइम, क्या हुआ था? My mistake. क्या? My mistake. योर मिस्टेक है वो, आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही है। आप ना वो हटा लीजिए, ईयरफोन हटा लीजिए एक बार। सिली मिस्टेक, ओके ओके फाइन। अच्छा, केमिस्ट्री में बताइए। 2 days will be good for this maths. I think so 2 days will be good, but आप अपना देख लीजिएगा। केमिस्ट्री के लिए बताइए, how many chapters? Is like you have to do the complete thing, आपको बहुत दिक्कत है उसमें। एक तो हाइड्रोकार्बन होगा, Yes. Hydrocarbon and equilibrium. इक्विलिब्रियम, Thermodynamics and हाइड्रोकार्बन। doing. थर्मोडायनेमिक्स यू आर डन और डूइंग? Doing. डूइंग, ठीक है। So there are 2 chapters, इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। So equilibrium तो थोड़ा बड़ा है, like equilibrium में like you have problem in which part? Calculation में problem है, conceptual problems हैं। concept में problem नहीं होना चाहिए हमको, जहाँ तक calculation में quadratic equations में है ना, जहाँ पे Yeah. quadratic equation वगैरह आ रहा होगा, log, then there you have, हाँ calculation में हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि log वगैरह है तो थोड़ा confusing हो जाता है। Fine, then I think this will also take at least 1.5 day तो लग जाएगा। I think you can complete equilibrium. For example, if you start in the morning and you can do at least 5-6 बजे तक कीजिए तो equilibrium हो जाना चाहिए, and then hydrocarbon you can start on the same day and then end on the next day somewhere around before lunch. So I think this would take 1.5 day only. And what is next? Physics. Physics. So how many chapters do you need in physics? Like completely फिर से करना होगा। फिजिक्स में नहीं होगा ना, आसान चैप्टर्स हैं इस बार, है ना? Yes. Yes. हाँ, वो सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। यू हैव एसएचएम एंड व्हाट एल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स, Yeah. ऑसिलेशंस, यही सब है ना? Yes. सो इज देयर एनी चैप्टर दैट यू नीड टू रिवाइज कंप्लीटली? No, not completely. All of them little, like very small. ओके, थोड़ा थोड़ा। सो इट विल टेक, लेट अस से 1 day, है ना, टू रिवाइज देम, और मोर? No, 1 day is enough. 1 day is enough, है ना? एंड व्हाट इज नेक्स्ट? Bio.
मैथ्स बायो क्यों लेके रख भाई, बहुत बच्चे हैं मैथ्स बायो लेने वाले। आई डोंट नो व्हाई डिड यू टेक मैथ्स एंड बायो? हाउ I मेनी was चैप्टर्स इन बायो? confused what to take. Like to अच्छा, तो आपने सोचा कि ले लेते हैं जो भी ऑप्शन है। फाइन। बायो में कितने चैप्टर्स आपको? 5 chapters. 5 chapters you have to redo। मैथ्स लेना था आपको। I don't know No, about I don't actually know I'm anything good about at bio। bio. Sorry। Then maths. Actually I'm better at bio. तो उसमें 5 चैप्टर आपको रिवाइज करनी है, ये 5 चैप्टर रिवाइज करनी है, या फिर आप अपने मन के तसल्ली को बोल रहे हैं कि आपको पढ़ने में अच्छा No, लगता है इस वजह से हम टाइम बर्बाद करते हैं इसमें? no, tricky so bad. नॉट लाइक दैट। ओके, नहीं Yeah. होता है ऐसा कि जो चीज अच्छा लग रहा है उसी को पढ़े जा रहे हैं। पीएचडी कर लेना सर उसमें, लेकिन बाकी चैप्टर्स भी तो है। अच्छा ठीक है, फाइन। तो ये बायो का कितना दिन होगा वो आप डिसाइड करो, क्योंकि आई डोंट हैव बायो, मेरे को आइडिया नहीं है बायो में। बस मेरे को बायो मॉलिक्यूल पता है। हाँ, बस बायो मॉलिक्यूल ही पता है मेरे को, और कुछ नहीं पता है। तो आई डोंट नो बट बायो आप डिसाइड करना कितना दिन चाहिए, है ना? देन Yeah. सो यू हैव 1 Bio 3 2 days will be. 2 days। so 1 2 3 4 5 6। so you have 6.5 days। that is fixed। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक्स, है ना, फॉर पर्टिकुलर टॉपिक एक चीज के लिए। एंड हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 24 तारीख है ना। यू हैव अ लॉट ऑफ डेज, यू हैव अ लॉट ऑफ डेज। ठीक है, तो आप स्टार्ट ऐसे कीजिए। नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग ना, सो फ्रॉम टुमारो ओनली। इंग्लिश तो छोड़ दीजिए आप, है ना, इंग्लिश को आप कीजिएगा ऑन 5th। इंग्लिश विल बी डन ऑन 5th of March। ठीक है, ऑन 5th of March। देन यू हैव टाइम, दैट मीन्स इसको हटा देते हम, 5.5 दिन का आपका है जिसमें आपको कंप्लीट कर लेना है। दैट मीन्स ठीक है, तो पहले क्या कीजिएगा आप बताइए, व्हाट विल यू स्टार्ट? Maths. मैथ्स, यू विल स्टार्ट विद मैथ्स, ओके ठीक है। so you can do today and tomorrow, you can not today, sorry, Friday Saturday you can do maths। जो है पहले ना, जो जो भारी चीज है, like you have those tough chapters जिसको आपने किया नहीं उसको कंप्लीट कर लीजिए, because you will have time to revise those smaller portions later on। तो you give Friday and Saturday, that is 25th and 26th। कंप्लीटली मैथ्स, ठीक है ना? तो मैथ्स में अच्छा, फिजिक्स का क्लास वगैरह हो रहा है क्या? यू हैव एनी फिजिक्स क्लास जिसमें आपको टेस्ट वगैरह देना है? अच्छा नहीं, आप नहीं पढ़ते हो यहाँ पे, या पढ़ते हो? कौन नहीं पढ़ता? कि मेरीन नहीं पढ़ती, आप पढ़ते हो? हाँ I बताइए। study all subjects यू except यू English. All एक्सेप्ट 4 इंग्लिश स्टडी। subjects. तो कुछ है क्या? किसी का टेस्ट है अभी? Tests are going on. टेस्ट इज गोइंग ऑन। किस चैप्टर का टेस्ट है? Uh, well, dates. अच्छा, यू सेंड इन चैट। किस मार दिया? I just wrote a test. I will send the time. आप चैट में लिख दीजिए क्या आप टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं आप। फर्स्ट ऑफ मार्च यू हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। 1 March को, अच्छा एक एक चैप्टर का टेस्ट है, ओके। अदर्स आर ओवर। ओ, सो ओनली वन टेस्ट यू हैव। अच्छा अच्छा, फाइन फाइन देन। ओके, so you can do 25th and 26th, you can do maths, है ना? Then on 20 25 26 you can do maths, and 27 28 you can do chemistry also। This you can do on chemistry, and for mechanical properties you have on First.
ऑन 1 मार्च मॉर्निंग Yes. में आप रिवाइज कर लीजिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना? सही है, Yes. ठीक है। नेक्स्ट, तो फिर जब आप आइएगा ट्यूसडे को, यू विल हैव अ क्लास ऑन ट्यूसडे, राइट? Yes. एक सेकेंड, 1 मार्च तो ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को आपको फिजिक्स भी क्लास होता है? Actually, he wrote on 1st March there is this thing, mechanical properties. ऐसे फिजिक्स का कौन सा दिन है आपका? Physics का Monday and Wednesday. मंडे एंड वेंसडे, तो मंडे एंड वेंसडे को जनरली तो मंडे वेंसडे को होता होगा ना? Yeah, but actually he wrote 1st Feb, and then I asked if it is with March. He said yes. So I guess the date changed, like the day. अच्छा, so you have test on the class timing only ना, I think, for physics? Yes. Okay. ठीक है, देन आई थिंक कुछ तो आपका चेंज हो जाएगा, या तो मंडे को होगा, 28th को होगा आपका, हो सकता है मे बी। सो उसमें आप देख लीजिएगा, लाइक व्हेन डू यू हैव दिस, सो आई डोंट थिंक इट विल बी ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे को तो केमिस्ट्री होता है, सो यू विल हैव अ केमिस्ट्री क्लास ऑन ट्यूसडे। खैर, तो व्यूअर्स, इन नेक्स्ट क्लास यू विल बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स जो आपसे नहीं बना हुआ इक्विलिब्रियम में एंड हाइड्रोकार्बन्स में, राइट? Yes. है ना? तो उसको आप लेके आ जाइएगा, ठीक है? Okay. ओके, दैट यू कैन डू, अदरवाइज लाइक देखिए, आई डोंट टेक टेस्ट। हमको ये लगता है कि राइट नाउ इट इज टाइम कि आपको इंडिविजुअली मतलब एक एक बच्चे को इंडिविजुअली प्रिपरेशन में हेल्प किया जाए, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपका कुछ वीक होगा, मेरीन का कुछ और वीक होगा, है ना? फिर दोनों के एग्जाम के स्केड्यूल्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है? तो दोनों के अंदर का मोटिवेशन लेवल भी अलग होगा। अभी जैसे आपके ऊपर प्रेशर है तो आप पढ़िएगा, मेहरीन को लगेगा अभी तो मेरा 17 को एग्जाम है, तो अभी हम थोड़ा सा ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाकी कंप्लीट कर लेंगे, तो उसको ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा, राइट? सो राइट नाउ व्हाट आई थिंक इज, इन केमिस्ट्री आई विल कीप इट लाइक दैट। अभी जिसका एग्जाम हो रहा है, आप वैसे तैयारी कीजिए। एंड मेहरीन, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, तो आपने ये देखा ना, लाइक जिस तरह हमने माजिया का बनाया, आप अपना खुद से बना सकते। अच्छा, आपने तो बनाया हुआ है ना अपना, राइट? Yes, sir. आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है ना, प्लान बनाया हुआ है कैसे तैयारी करनी है? Yes, sir. तो उसमें क्या है, केमिस्ट्री का क्या क्या है, कब कब है, आप क्या क्या पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में? We have chemistry on 17th. वो तो हमको पता है, हम वो नहीं पूछ रहे। आप कब क्या पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, लाइक ऑन विच डे यू आर स्टडीइंग विच चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री? Right now I'm doing models, chapters, राइट, subject wise. So after that I made the timetable for. ओके, सो राइट नाउ यू आर डूइंग, अच्छा, कंप्लीट। Yes, sir. अच्छा, ओके, फाइन। यानी कि आपने रिवाइज किया हुआ, ठीक है, हाँ, दैट इज आल्सो गुड। सो आफ्टर गिविंग द मॉडल्स खुद से, तो यू विल गेट एन आइडिया दैट कहाँ पे आपका ये हो रहा है। सो डू यू कीप अ टाइमर व्हेन यू डू द मॉडल्स? Yes, sir. Like I check the time. यू चेक द टाइम ना? हाँ, कीप अ टाइमर, बिकॉज टाइम मतलब सवाल आ जाए, टाइमिंग भी एक चीज है जो कम रहता है एग्जाम में, सो टाइमर लेके चलिए। एंड सेम थिंग फॉर माजिया आल्सो, है ना? सो ट्राई टू लॉग द टाइम्स, लाइक हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू मी। फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट फॉर 1 आवर, तो कितने सवाल हुए मेरे से, है ना? देन यू हैव टू इंक्रीज ऑन दैट एफिशिएंसी आल्सो, कि एग्जाम के टाइम, लाइक केमिस्ट्री में खास तौर से उतना नहीं होता है कि टाइम कम पड़ जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव, like you see those questions and you get it, okay fine, ये मेरे को आता है, ये मेरे को नहीं आता है। in maths and physics sometimes you will get stuck, अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आंसर आ ही नहीं रहा है। केमिस्ट्री में उतना नहीं होता है, और बायो में तो कुछ होता भी नहीं उस तरह का, आई थिंक, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास ऑन ट्यूसडे, माजिया आप इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोकार्बन से जो हो आप लेके आइएगा डाउट्स। मेहरीन, आपको भी यही इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम एंड हाइड्रोकार्बन? Yes, sir. अच्छा, लेकिन फिर भी स्टेट्स ऑफ मैटर के तो कुछ सवाल आप लोग से हो नहीं रहे हैं।
ठीक है, तो एक बार नोट्स थोड़ा सा ऐसे ना ऊपर ऊपर से पढ़ते रहा कीजिए, लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग व्हाट आई कॉल। उतना आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन जस्ट कीप रीडिंग। जो अच्छा लगे टॉपिक उसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लिया, ये ऐसा लगे कि ये हमने तो पढ़ा ही नहीं, लगता ये मिस हो गया था मेरे से, है ना, देन यू स्टार्ट रीडिंग इट। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए यू इन गैस लॉ, आई थिंक चार्ल्स लॉ इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जिसको आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, कि किस तरह से वॉल्यूम अफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से, एंड व्हाई द वॉल्यूम गेट्स जीरो एट 0 केल्विन, दैट मींस -273 डिग्री सेल्सियस। सो थोड़ा इस तरह से पढ़िए, ठीक है। एंड आई होप यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम एनीवेयर एल्स, राइट। कुछ इंस्टा टिकटॉक टिकटॉक चलता है वहां पे, मिडिल ईस्ट में टिकटॉक चलता है? Yes. Yes, sir. यस, चलाते हैं, मतलब आप लोग अनइंस्टॉल कर दिया है आप लोगों ने? I don't have. You don't have. What about Mehreen? Yes, sir. I uninstalled. Uninstall? Yeah, I will uninstall. No, sir, because of exams. है ना, you have uninstalled. Insta सब कुछ खत्म ना? Right? Mehreen and Mazia? Yes, sir. Yes. है ना? वो इंस्टा भी टिकटॉक ही है, रील्स आ गए तो टिकटॉक ही हो गया ना। तो प्लीज अनइंस्टॉल ऑल दोस सोशल मीडिया। इवन आई वुड से अगर हो सके तो लाइक स्क्रीन टाइम, योर स्क्रीन टाइम शुड बी एकदम ही मिनिमम होना चाहिए स्क्रीन टाइम। इफ यू गाइस हैव लैपटॉप, आई विल सजेस्ट दैट ऑलवेज यूज लैपटॉप फॉर स्टडी, क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शंस का उतना ज्यादा स्कोप नहीं रहता है, ठीक है। इफ यू हैव लैपटॉप, यूज दैट आई वुड से। मोबाइल जितना हो सके दूर रहिए, किताब लेके रखिए। इफ यू हैव सम पीडीएफ जिससे आपको कुछ पढ़ना रहता है, देन टेक प्रिंट आउट्स रादर देन लुकिंग इन द फोन, ठीक है। स्क्रीन टाइम जितना भी हो, आपका स्क्रीन बंद रहना चाहिए दिन भर, है ना। सो और आपको कोई जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए फोन की, क्या आप फोन उठा रहे हो, ठीक है। मतलब कोई कॉल भी कर रहा है तो फिर मतलब उठा लो, जरूरी है तो, वरना आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप फोन उठा रहे हो। ऐसा माहौल बना के रखिए अपने एनवायरमेंट स्टडी का, कि आपके पास सारे प्रिंट आउट्स हैं, सारे पीडीएफ का आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है, जो किताब है आपके पास वो किताब मौजूद है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपके पास? उधर मिलता नहीं है जनरली। सो बोथ ऑफ यू हैव एनसीईआरटी? Yes. They give from अच्छा school. अच्छा, मेरीन आपके पास Yes, sir. टेक्स्ट बुक मतलब वो हार्ड कॉपी ना, पीडीएफ Yes, तो sir. नहीं? हाँ ठीक है। सो गेट दोस, जितना कम से कम हो सके मोबाइल को छुइए ही मत ज्यादा, है ना। हो सके दूसरे कमरे में रख के आ जाइए पढ़ने में। अच्छे से 2 घंटा पढ़िए। 2 घंटा में आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक यू कैन टेक हाफ एन आवर ब्रेक्स एज इट सूट्स यू। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप स्क्रीन पे काम नहीं करो तो हाफ एन आवर तो नहीं, यू कैन sit at least for 1 hour without any breaks, है ना। then just for 5 minutes you can move a bit here and there with timers and everything। ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटा में उठ रहे हैं तो अब हम 15 मिनट ये कर लेते, नहीं। 1 घंटा, then you 5 minutes you take rest, then again you study for 1 hour, then you take maybe half an hour break कुछ खा पी के, then again you sit for 1 hour without any distraction। without any distraction का मतलब कोई distraction ही नहीं होना चाहिए। like you tell everyone कि हमको कोई बुलाएगा भी नहीं अभी, 1 घंटे फोकस से पढ़िए, ठीक है। उसमें आपको बहुत ही ज्यादा एनहांसमेंट लगेगा, जो भी चीज आप कर रहे हो, या तो प्रॉब्लम जल्दी होने लगेंगे, बट इट नीड्स प्रैक्टिस, तो थोड़ा उसको चालू कीजिए करना। एंड देन वी विल मीट ऑन ट्यूसडे, ठीक है। सो बोथ ऑफ यू, अभी हमको यही लग रहा है कि आपने फिर कोई यही लेके नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम ही लेके नहीं आया। एंड बाय द वे आई हैव टू डिस्कस दिस, हम भूल ही जाते हैं अभी, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे, है ना। and I have to get this, wait a second, in my laptop। electronegativity वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, then we will leave। so Mazia, we are going to discuss one question that came in Mehreen's model paper, ठीक है। Okay. ओहो, ये तो आपका इससे है, एस ब्लॉक से है, राइट। Yes, sir. तो इस ब्लॉक में तो शायद हमने, अच्छा आप लोग का डिस्कशन एक बार कराया था इस ब्लॉक का, वेयर इज दैट।
ये तो है ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी और इसका। अच्छा चलिए देखते सवाल देखते हैं आपका। Arrange the following elements in increasing order of their hydration enthalpy. So I think you know that the order will be like this, right? So Be2 plus will be most hydrated, followed by this due to the increase in size, right? Yes, You sir. remember this part? है ना? So we had discussed this. ये तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन I have discussed the S and P block with you guys कि नहीं? These things you have ना? Yes, sir. है ना? यही तो डिस्कस किया था हमने मेनली, राइट? सो हमने बस एक ग्रुप 1 के लिए डिस्कस किया था। एक तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, this is going to decrease down the group, so the smallest will have the highest hydration enthalpy. ठीक है, तो एक सवाल तो वो हो गया। What is the next question here? What is the next question? BeSO4 and MgSO4 are readily soluble in water. Why? Because of high hydration enthalpy. Enthalpy of Be2 plus and Mg2 plus due to small size. I think ये तो ऐसे दिया होगा यहाँ पे, the hydrogen are ionic solids and soluble in, है ना? एक तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ है, they are ionic also, है ना, due to small size and ionic nature लिख दीजिए अगर आप इसमें लिया हुआ तो ionic nature, ठीक है? Lattice energy and hydration enthalpy. For solubility, hydration enthalpy should be greater than lattice energy. Why did you get confused here? Justify the magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas barium nitrate crystallizes as anhydrous salt. Okay, then you will have somewhere here written hydration energy varies with size and decreases with increase in size. Oh, you have this. Mehreen, आपने ये किया कि नहीं किया ये बताइए तो। Yes, Mehreen. Yes, sir. Did you do these questions? I didn't do the C1 and E1. I wrote different answer. Achha, you wrote different answer. You did not do C1 and E1. Okay, fine. So C, अच्छा C देख रहे हैं हम ना, magnesium nitrate. Okay, the next is in case of sulfates, the lattice energy in case of sulfates remains almost same with increase in the atomic number of alkaline earth metals due to the large size of sulfate ion. Hence, the hydration energy only governs the solubility in this case. Thus, the solubility of alkaline earth metals sulfates decreases as the hydration energy increases moving down the group. As we move down the group. Okay. So E का आंसर तो यहाँ पे है आपके पास। So आपने ये लिख दिया लाइन लगता है ना बस। D is answer. क्या? The answer of D. What is E then? Sir, do you want me to send? अच्छा अच्छा नहीं मिल गया। E है आपके पास first ionization enthalpies of alkaline earth metals are higher than those of corresponding group 1. Second, okay. So which question did you attempt? In E there are two parts. One है and then or two. Which part did you attempt, Mehreen? First part, sir. First part. Okay, fine. E हम बता देते हैं आपको, इसमें क्या है? Alkaline earth metal. That means they are saying first delta Hi of group 2 is greater than first delta Hi of group 1, right? This is the question ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में फॉर ग्रुप 1 में क्या होता है, आपके पास कोई भी मेटल हो दैट विल बी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका NS1 and this will become NS0. You can write it like this. It will be
noble gas, electronics configuration, and then you have NS1. When you remove the electron, it will be noble gas electronic configuration, right? Plus 1 electron. So when we are removing 1 electron from group 1 elements, then it is directly getting converted into a noble gas that has a stable electronic configuration, right? We have a stable electronic configuration in the noble gas. But if I look at the group 2, for group 2, I can write the general electronic configuration as noble gas electronic configuration and NS2. If I remove 1 electron, because we are having the first ionization enthalpy, you know? So when we have the first ionization enthalpy, I'm removing only 1 electron, and by removing 1 electron, I am not getting. This is the electronic configuration that I'm getting, right? So this is stable. This is unstable. Okay. So maybe you can do this. You can write the answers like this, that for group 1, you showed that we are getting stable electronic configuration, and then for group 2, you are getting unstable electronic configuration, because you have, other than noble gas, there is NS1 electron, right? There is NS1. And that is why you can say that since after the first ionization enthalpy, group 1 elements, they form stable electronic configuration, whereas group 2 elements, they form unstable electronic configuration. That is why the first ionization enthalpy of group 2 is greater than that of group 1. You got it? Yes or no? From these two. What about Mazia? You got it? Yes. So you can write it like that. No. Now they are asking, justify the magnesium nitrate crystallizes with 6 water molecules. Achha, so one thing is that, do you know this water of crystallization? Yes or no? No, sir. What about other? Mazia? No. Okay, wait a second then. So let us suppose you have magnesium, right? So magnesium, when it will be magnesium nitrate, if you have. What is this? Magnesium nitrite or nitrate? Nitrate. Okay. So from this magnesium nitrate, whatever salt you have of magnesium, what is going to happen? If it will ionize, it will form Mg2 plus, right? Aqueous solution. Okay. Mg2 plus. Now, when you look at barium, it will form barium 2 plus aqueous, right? Now, you tell me whose size is larger, magnesium or barium? किसका size बड़ा है? Magnesium or barium? Tell me. Barium size is greater. So now you tell me hydration enthalpy का order क्या होगा? What will be the order for hydration enthalpy? Which will be higher, magnesium or barium? Which will be higher? You have that, na?
Read this part. Hydration energy varies inversely with size, that is decreases with increase in size. Magnesium. So इसका ज्यादा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम का, राइट? Yes, sir. Yes or no? है ना? If magnesium's hydration enthalpy is higher, that means I can say it has higher tendency to interact with water. Okay, now it can interact with water more effectively. That is why it gets hydrated. That means Mg2 plus gets hydrated with 6 water molecules from 6 sides, like this. Okay, so just imagine these are water molecules. So they are interacting with 6 water molecule. One Mg2 plus is interacting with 6 water molecule. Whereas barium, it is very large. That is why it is anhydrous. Anhydrous means what? It does not have any water. It has higher tendency to interact with water. Whereas since Ba2 plus is larger in size, it is anhydrous. Okay, you got it? So basically it was two things, size and the dependency of hydration enthalpy on the size of a particular ion. Okay, so since magnesium, it has tendency to interact with water. That is why in the salt it has 6 water molecules, 6 molecules of crystallization of water. It crystallizes as anhydrous salt and it crystallizes with 6 molecules of water. You got it? Yes or no? Yes, sir. It depends on the hydration enthalpy, that is how effectively it can interact with water. Okay. By the way, Mehreen, any other questions from here? ये क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल question also. 9th क्वेश्चन में हमें आपको क्या दिक्कत हो गई? Phosphorus vapor weighs इतना gram at इतना degree Celsius at 0. What is the molar mass of phosphorus? You have got pressure, you have got volume, you have got grams, you have got temperature. ठीक है, तो pressure है आपके पास, volume है, number of moles R and T. So you can find number of moles from here, yes or no? Yes, sir. या आपने कैलकुलेट किया है? आपके पास नहीं है? Let me tell you that. Wait a second. Pressure is how much? 0.1 bar into what is the volume? Okay, volume is milliliter. Okay, so 0.00035 हो जाएगा, 3405. EV हो गया. Then R will be how much? Tell me. What value will should we use? 0.0821, 0.031, or 8.314? नहीं ना, 8.314 कैसे? देखिए, लीटर एटीएम है ना, ये लीटर बार है? क्या है? लीटर बार है. 0.0831. Yes, sir. ठीक है, आप वही हम ये हो रहा है, लाइक हम तो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं. आई एम सॉल्विंग इट लाइक दिस. आई एम टेकिंग n is equal to pressure is 0.1 into 34.05 divided by, first of all, 1000. That means I am taking this as liter. Then I will write 0.0831. ठीक है, into what is temperature? 546. 0.0831
into temperature is how much? 546 plus 273. Okay, so this number of moles is coming out to be 1000 upon 0.831. This is coming to be 5 into 10 to the power minus 5 moles. Okay, कितना ये नहीं आया था आपको? क्या आया था? क्या दिक्कत हुई थी आपको मैरी? Sir, हाँ बोलिए. sir, I made mistake. What mistake did you make? R. The R. ठीक है, तो that is one thing that now you will revise always, है ना? एग्जाम में जाने से पहले यही सारी चीजें ना पॉइंट आउट कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, लाइक टू डू लिस्ट बिफोर द एग्जाम. क्या क्या देखना है आपको, जो एकदम सिली मिस्टेक से बच जाओ. ठीक है, सो आर की वैल्यू यू हैव टू कीप इन माइंड. 8.314 कभी मत यूज कीजिएगा. 8.314 यूज कीजिएगा आप थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पे आपको एनर्जी आ रहा हो. ठीक है, if you have energy somewhere, there you will use 8.314, fine. And states of matter chapter में generally you will either use 0.0821 अगर आपके पास ATM में pressure हो, and 0.0831 if you have pressure in bar. Got it? Yes, sir. ठीक है, so states of matter में बस यही दोनों यूनिट्स रहेंगे. ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ये हो जाना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए, then you have the given mass. So number of moles is equal to given mass by molar mass. So now the molar mass, it will be equal to whatever the given mass is divided by the number of moles, है ना? तो इसके बाद आपको इसको डिवाइड कर देना सा मोलर मास के लिए 0.0625 से. Then you would have got, एक बार करके ही देख लेते हैं. 5 into 10 to the power minus 5 and divided by एक सेकंड, इतना कम क्यों आ रहा है इसमें? प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, then our temperature values is very high, 0.0625. Marine, can you try solving it using 0.0831 और फिर ml को लीटर में चेंज करके try solving it ना, how much you are getting? Okay, sir. Marine, एक सेकंड रुक जाइए, आप एक काम कीजिए, बस एक ही सॉल्व कर लीजिए इसको. प्रेशर इज हाउ मच? ओहो, हमने ये कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास.
Okay, fine. नहीं, ठीक. तो molar mass हो जाएगा. I did opposite here. Molar mass will be equal to given mass by number of moles. So this will be 0.06 कितना था? नहीं, it is fine. हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे. While calculating, I did something different. I've written it right now. Given mass by number of moles. So given mass is 0.0625 ना, divided by so 125 के around you will get somewhere around 125, I think. So here you will get somewhere around 125 grams per mole. Okay, somewhere around 125 grams per mole in phosphorus, molar mass of phosphorus. So this may be like red phosphorus or something. This may P4 hoga, I think. P4, it will be P4. It will be P4 only. Molecule P4 होगा because I think 30 something is the molecular mass into 4, 120 के around. हाँ, it will be P4. Okay, so ये आप ठीक कर लीजिए बस अपना, आपका आंसर आ जाएगा. Okay, मेरी R की वैल्यू ठीक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास. And anything else? और तो नहीं होना चाहिए कुछ ना. चलिए, अच्छा ये सवाल आया था आपका 7th वाला. Assumptions on kinetic theory that does not hold good. Compressibility factor, write its mathematical equation. Okay. Spencer central circle rule, beta elimination. ये किया कि नहीं आपने beta elimination? Yes, Sir, I wrote the eliminating beta from an equation. हाँ ठीक लिखा आपने, वही है beta elimination reaction ना. तो I think कहीं written the name नहीं लिखा था क्या हमने? Beta elimination reaction भी बोलते हैं उसको. That was in preparation of alkenes ना. देखिए लिखा था ना हमने. It is known as beta elimination. Right, since beta hydrogen is getting removed. यही लिखा ना आपने, yes or no? Yes, sir. Okay, fine. Good. ठीक है. तो वही like most of the paper एक चीज और दिखाते हैं हम आपको, like exactly like from the notes you can say. This Woods reaction, you had now one conversion in which you had to make bromomethane. From bromomethane you had to make ethane, yes or no? Sir, I wrote the other one. Marconico's. Achha, you had option in that. You had option in that question? Yes, sir. Oh, okay, fine. Marconico with one example.